द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ R&D एंड एडवांसमेंट दिल्ली ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। लेह के कुछ सिलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और NIHA की एक टीम ने लेह में ये ट्रेनिंग दी। NIHA लगभग 30 सालों से स्टैंडर्ड बेस्ड लर्निंग एंड कस्टमाइज्ड मैनेजमेंट प्रोग्रामों में लीडर बनी हुई है। वो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन करते आए हैं। ऑर्गेनाइजेशन को अहम स्किल को सीखने और तैनात करने के काबिल बनाना इसका मकसद है। लेह में ट्रेनिंग सेशन के आयोजन का एक अहम पहलू ये था कि लोगों को यहाँ के कस्टम्स, ट्रेडिशंस और चैलेंज के बारे में जानकारी दी जाए। From National Institute of HRD and Advancement, particular workshop where the people are there from the different regions, from Delhi, Mumbai, Hyderabad. They are from DRDO people are there, Lubrizol, Indian Oil Corporation. And why this particular place was selected, this Leh? Because always the programs, training programs are conducted all over India at different places, and whenever in this region it was conducted, it was always at Srinagar. But after this union territory has come into existence, it was observed that at least people should be well aware about the Leh also. People are having options before coming here. Various kinds of illusions are there. Various kinds of aspects relating to safety and security is there. But after landing here, we have seen here the different kind of culture. We have seen here how the people are just interacting with you in the most congenial manner. Life is so smooth here. All those illusions, all those things were merely totally imaginary ones. And as far as this training part is concerned, this particular program is relating to the personal growth, government functionaries and the public sector undertaking people in order to have their professional and personal growth so that they can help for their organization, for their organizational growth. And towards that, we are having various kinds of sessions relating to image building, relating to leadership skills, relating to all those team building. Then the various behavioral skills are there relating to time, stress, anger. Besides that, we are going to discuss about the aspects about the sexual misconduct at workplace, which is quite relevant, which again one thing or the other is happening at different places. How to take care of the same? It is very easy to see, but very difficult to follow it. It is very simple to say, but when it happens, how the people react. Before verdict is there, immediately people have already made their opinion. So in this particular program, we are just going to tell about the various aspects by which people can just gather knowledge. All these officials who have come from the different parts of Delhi, Bombay and Hyderabad, because go back, they can just spread the things, not only with regard to this organizational setup, but also with regard to the Leh. As today we have seen, one of our batch has gone to have an interaction with the people outside in order to know about these aspects. But after spending 4 days here, I can very well see the time is not far that people will be regularly flocking in here, because this place is really one place where people would like to come again and again. हम लोग आने के पहला ये मन में सोच के आया था कि, लेकिन जैसे हम लोग आ गए वैसे हमको टूरिस्ट के पास जाने के बाद वहाँ के जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर है या शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, पूरे हेल्पफुल आदमी है सब लोग। और इधर आने के बाद हमको ऐसा लगा कि ये इंडिया का बेस्ट हिल स्टेशन है। यहाँ के लोग, यहाँ के सब ड्राइवर लोग, या सब वातावरण अच्छा है। हमारा ट्रेनिंग के बारे में बोलने का तो ये, मैं 20 साल से ये ट्रेनिंग के साथ ज्वाइन हूँ, और ये ट्रेनिंग लेने के बाद आज के मौसम में
जो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट की पोजीशन चल रहे, वो आगे कौन सा इंडस्ट्रियल अच्छा चलना चाहिए, आप वर्कर या मैनेजमेंट के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, ये हमको अच्छी तरह पढ़ाता है। और इसलिए हम यहाँ पे ले आने के बाद ऐसा लगता है क्या कोई भी प्रॉब्लम चाइना और इंडिया का सबको एक साथ जुट के काम करने के लिए आने के लिए जो आते हैं पर्यटक आते हैं वो लोगों के साथ मिलजुल के वातावरण एकदम